जी, आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रिव्यू ऑफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके फीचर्स देखेंगे, इसकी रिटर्न्स देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस, इसके सेक्टर एलोकेशंस, इसके टॉप होल्डिंग्स, और क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, कैसे इन्होंने दे हैव मैनेज्ड टू गिव गुड रिटर्न्स ओवर द पास्ट 10 इयर्स। इंडेक्स परफॉर्मेंस देखेंगे, इंडिया में स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के थ्रू लेंगे और अंत में हम देखेंगे इफ दिस फंड मेक सेंस फॉर यू एज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो ऑन SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बिलोंग्स टू the well-known SBI bank in India. Given that there is a huge number of mutual funds in our country and even इतने सारे asset management houses हैं हमारे देश में, तो as an investor हम कभी-कभी हमारे लिए बड़ा difficult हो जाता है to uncover the better performing म्यूचुअल फंड्स जो हमारी नीड्स हैं, हमारे प्रेफरेंसेस है, हमको जो रिटर्न्स चाहिए, हमारा जो लुकआउट है, उस हिसाब से हमको वो फंड्स को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे म्यूचुअल फंड एंड इतने सारे AMCs एग्जिस्टिंग हैं। तो इसलिए मैंने ये आई वांटेड टू डू अ रिसर्च बेस्ड ऑन द लास्ट 10 years रिटर्न। आई नो 10 साल सिर्फ रिटर्न्स इज नॉट ओनली द मेजर प्रेरोगेटिव टू सी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें हमको और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं टू चूज फ्रॉम व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग a good mutual fund to make your put your hard earned money into, to invest your hard earned money into। लेकिन अगर जिस तरह से आप देखें तो 10 years is a good sum of time, good amount of number of years to analyze how the mutual fund has performed over the years, given कि उन 10 साल में आपको रिस्क देखना होता है, रोलिंग रिटर्न्स देखने होते हैं, और वो टाइम जब आप वो रिटर्न मेजर कर रहे हैं, वो टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी रही होगी, मेजर क्या इवेंट्स हुए होंगे, गवर्नमेंट कैसी रही होगी। तो ये सारे काफी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं टू कंसिडर बिफोर यू आर चूजिंग योर टाइम फ्रेम टू सी हाउ द फंड हैज परफॉर्म। बट आई फील 10 years इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू चेक, क्योंकि इसमें आपके काफी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, तो ये सब कुछ आई थिंक इवेंट 10 years, a decade is a decent amount of time to see, to judge how a mutual fund has performed. Back to SBI small cap mutual fund. So this fund has given us a very good returns of around 26% CAGR per annum in the last 10 years। जी हाँ, और इस फंड ने अपने इंडेक्स जो कि है BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, उसको भी आउट परफॉर्म किया है ओवर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम पीरियड्स एक्सेप्ट द रीसेंट पास। जी हाँ, रीसेंट अगर हम 1-2 साल में इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ी कम रही है, लेकिन अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो इस फंड ने हमको 26% रिटर्न्स दिया है, विच इज आउटस्टैंडिंग। सो जो AUM साइज है 17,000 करोड़ है इस फंड का, विच इज वेरी द लार्जेस्ट अमंग्स्ट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी अमंग्स्ट द पीयर्स, लेकिन फिर भी द फंड हैज मैनेज्ड टू डू वेल। सो आगे हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट द फंड इज डूइंग सो वेल एंड हाउ एज इन्वेस्टर्स इज इट पॉसिबल टू गेट दोज पास्ट रिटर्न्स फॉर अस। वो तो हमको पता है पॉसिबल होगा कि नहीं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम वो मेजर पॉइंटर्स देखेंगे विच मेक्स इट अ गुड डिफरेंशिएटर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एंड और हमको क्या लगता है कि आगे जाके क्या ये फंड अपनी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो एट द एंड वी विल हैव अ लुक एट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की कितने हो सकते हैं इस फंड में। अगर आपने एज एन इन्वेस्टर 10 साल पहले इस फंड में 10 लाख रुपए डाले होते तो आज के दिन आपके लिए वो 1 करोड़ हो जाते हैं। इसी मैं ये बहुत वीडियोस में और बहुत जगह ये सुनती हूँ कि इफ एट दैट टाइम यू हैड पुट दैट मच मनी, तो आज के दिन आपके इतने एक्स रिटर्न्स हो जाते, आपका इतना गुना पैसा बढ़ जाता। सो आई वांटेड टू यूज दिस लाइन इन दिस वीडियो। सो इफ एंड हियर इट एक्चुअली डज अ जस्टिस, बिकॉज अगर आपने 10 साल पहले 10 लाख इस फंड में डाले होते तो आज के दिन वो आपका 1 करोड़ हो जाता वो पैसे, और अगर आपने तब 1 करोड़ रुपए डाले होते तो वो आपका आज के दिन 10 करोड़ हो जाता। वाओ! So that means कि ये फंड ने हमको around 10x returns दिए हैं in the last 10 years. Now let us see the different features of this fund. So this fund, India Small Cap, see India Small Cap Index has given a very good performance in the last 10 years of 20% CAGR, and SBI Small Cap Mutual Fund has outperformed those benchmark returns। जी हाँ, जहां इंडेक्स ने 20% रिटर्न्स दिया था, SBI ने हमको 26% रिटर्न्स दिया। तो अगर आप देखें तो इसके रिटर्न वाइज इस फंड ने काफी अच्छे हमको रिटर्न्स दिए हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.7%, विच इज ऑल्सो वेरी लो गिवन द ह्यूज साइज ऑफ द फंड ऑफ अराउंड 17,000 crores of AUM। स्मॉल कैप स्पेस में
have such a small expense ratio and to give such huge returns is a big thing, because this shows that the fund managers team is doing a good job in selecting good stocks through a bottom up research. So it is not easy to do that, and hats off ki inhone they have managed to give us such good returns. So now let's take a look at the total overall holdings of this fund. The fund has around 55 stocks under its belt, और जो इसके top 5 holdings हैं, they account for only 20% of the overall portfolio value. और इस fund की जो allocation है, it holds a variety of sectors under its total overall holding. Market cap wise अगर इस fund का हम allocation देखें, तो as the name suggests, majority of this fund has holdings in the small cap section. So around 80% of the total portfolio value is in the small cap companies and the rest is in mid cap. So what are the small cap? कई बार investors की ये question होती है कि how are these stocks divided into large, small and mid cap? तो small cap stocks are outside of the 250 top companies arranged according to market cap. तो SEBI के guidelines के हिसाब से a small cap fund should have at least 65% of its holding into the small cap section, so which this fund meets very comfortably. Services and capital goods account for almost 13 to 15% each in this particular fund. This shows that how the fund manager has been deft in moving over to capital goods section, because capital goods में अभी काफी boom रहा है इन दिनों पिछले कुछ सालों में, क्योंकि there has been a boom in the overall infrastructure spending in our country. अगर आप interested हैं तो आप different mutual funds होते हैं जो infrastructure focused होते हैं, और investors, you as investors you can invest in those mutual funds to make the most of the huge capital spending जो हमारे देश में अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली काफी mutual funds designed है. तो if you are interested in capturing the infrastructure sector of the country, आप ये ऊपर जो link flash हो रहा है, you can visit that playlist to see the different mutual funds that are focusing on the infrastructure sector in our country. So अब हम वापस आ जाते हैं अपने SBI म्यूचुअल फंड पे. तो जो SBI म्यूचुअल फंड है, जैसे हमने बोला, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में अराउंड 13 to 15% ईच है इनका एलोकेशन. तो कैपिटल गुड्स, बिकॉज इट इज बूमिंग, द fund manager is doing a good job because to capture the high growth areas right now in our country. Services में हम देखें तो the fund has allocation towards different QSRs including Westlife as well as the chain hotels जो हमारे होटल इंडस्ट्री है. तो उसमें जैसे अब हमारा ये शैलेट हो गया या फिर हमारे लेमन ट्री होटल्स हो गए, तो उसमें इस म्यूचुअल फंड की एक्सपोजर है टू कैप्चर दी फास्ट मूविंग कंज्यूमरिज्म इन आवर कंट्री, जो बूम है हमारे अभी ट्रैवल्स में या फिर ये कॉर्पोरेट स्पेंडिंग्स में. तो वो सबको कैप्चर करने के लिए सर्विसेज ऑल्सो फॉर्म्स अ गुड चंक ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड. तो ये आप देखें, इसमें QSRs हैं, होटल्स हैं और डिफरेंट कैपिटल गुड्स में इसका एलोकेशन है. So the fund also has a good exposure towards high growth stocks in the form of ISAB and Timken, which are MNCs and they are growing rapidly. So ye, the fund manager is trying to capture the existing growth area and also the growing areas with different interesting stock picks in the overall portfolio. अब हम देखते हैं जो volatility है इस म्यूचुअल फंड की काफी लो है, sharp ratio is very decent, which shows that the fund gives us good risk adjusted returns. Also जो इस fund के manager हैं Srinivasan, he has been with the fund with the last 10 years, and consistency is really important for such huge funds for to give that kind of assurance and trust to its investors. So ticking all boxes in that area, if you see, the fund manager has been there around since the last a decade, and over which time the fund has also given us excellent returns. अब हम देखते हैं जो portfolio turnover है इस fund का is 87%, which is high when you compare to the other funds. लेकिन given it's a small cap fund, of course this is a normal range, because you have to be agile as a fund manager to pick different stocks and to because the small cap companies जो होते हैं वो काफी volatile होते हैं. तो as a fund manager it is your job to see which stocks are doing good, how fast you can move. इसीलिए ये सारे फंड्स के थोड़ा सा जो हमारा टर्नओवर रेशियो होता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द हाई साइड बिकॉज द स्मॉल कैप कंपनीज. जैसे हमने अभी बात की व्हाट वी लाइक अबाउट द फंड, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट आर द इंप्रूवमेंट एरियाज वेयर द फंड कैन इंप्रूव. सो द फंड हैज नॉट डन रियली वेरी वेल इन द लास्ट 1 or 2 years. जब आप देखें जो इसके peers हैं, they have really galloped ahead in the race. जैसे कि Quant small cap fund has given astounding returns of 50% in the same time period, where this fund has actually fallen down the index performance. अब हम देखते हैं जो
सेकंड पॉइंट मुझे इसका थोड़ा कम समझ आता है वो है इसका लार्ज AUM size, but that is that is the problem across the different AMCs. Why? Because AMs जब ये AUM higher हो जाता है तो it becomes difficult to and make in large investments or to make exits because it leads to liquidity issues. So this is a common problem across AMCs having such large AUM size, but what it is. So ये आपका थोड़ा एक liquidity concern हो जाता है to for managers to pick up even good stocks, क्योंकि then it makes it difficult to make huge investments or to exit out of such large investments. So all in all, SBI small cap fund is a good mutual fund if you are looking at investing in the small cap area, because the fund has given us such huge returns in the last 10 years. अगर आप while most of it can be attributed to the bull run, हमारे कंट्री में अभी इतना जो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो रहा है तो उस वजह से आप दे सकते हैं उसको थोड़ा some part of it success can be attributed, but आप इसमें AMC का जो सक्सेस है उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते. The over keeping the overall expense ratio low, do selecting good stocks, growth stocks, growing stocks in this space, तो ये सारे काफी इसके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं. beating the index returns over the last 10 years. So only area is कि अगर AUM पे कुछ हो जाए, क्योंकि liquidity concern आ जाती है इस केस में, तो इस फंड का the fund should now start focusing more on returns, because in the recent past 1 or 2 years the returns have become tepid. So लेकिन अगर आप देखें फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, सो एक आपको अश्योरेंस हो जाता है कि दिस फंड बिलोंग्स टू SBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन आवर कंट्री. तो वो आपको एक पर्सनल गारंटी, मेंटल पीस हो जाता है कि आपके पैसे कहीं जाने नहीं हैं, दे आर सेफ एंड दे आर सिक्योर. द ओनली थिंग इन्वेस्टर्स शुड रिटर्न नाउ हियर, जो हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हम बात करते हैं कि जो हमारा 26% लास्ट 10 years में रिटर्न हुआ है, सो डो नॉट एक्सपेक्ट द सेम परफॉर्मेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 10 years. इट इज नॉट पॉसिबल कि हो सकता है आपको वो 26% रिटर्न ना मिले आगे जाके, लेकिन अगर 13% रिटर्न भी आपको मिलता है, so it is a very good chance to get that kind of returns in the next 10 years. So that is why, given the good returns and the good stock selection and also the fund managers consistency, SBI small cap fund is a good space that you can look at investing in the small cap area. So that was all from my side. I hope you like my video. अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आएं. I hope to see you again. Also, if you want, you can check the playlist that is flashing on your screen for different mutual fund reviews that I have already done. तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लो फ्लैश हो रहा है, आप उस पर क्लिक करें, so you can easily subscribe to my channel. So that was all from my side. Bye and have a very nice day.